Okay, let's start the things in terms of textual analysis and representation. This is not only about textual analysis, this is all about representation also. Okay, whenever I am going to come towards the textual analysis, this is, Okay, so this is more about the qualitative analysis. हमें क्या करना पड़ता है? If you talk about the qualitative analysis, हमें subjective analysis की तरफ जाना है. This is more about the subjective analysis, or you can say this is a qualitative analysis also. This is a qualitative analysis where we need to go for subjective elements. हमने इसकी interpretation की तरफ जाना है. Qualitative analysis where we need to go for interpretation. हमें किसकी तरफ जाना है बेटा? Interpretation की तरफ जाना है. ठीक है जी, चलें अब मैं इस चीज़ को समझाता हूँ आपको. आपके कोर्स के हिसाब से हमारा जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए ये हमारा होगा for 25 marks. (30-minute screening) and 45 minutes for essay. 45 minutes for essay. Okay. एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं, कितना लिखना चाहिए इसके अंदर? ठीक है, देखिए इट्स मोर अबाउट, अगर मैं इसको कोई क्वांटिफाई नहीं कर सकता, आई कैन नॉट से इट्स अ सब्जेक्टिव एनालिसिस, आई कैन नॉट क्वांटिफाई इट कि भाई इतने वर्ड्स होने चाहिए इतने, तो मैं लेकिन बच्चों की आसानी के लिए बोलता हूँ भाई 1000 वर्ड्स तक तो मैनेज कर लेना इसके अंदर लाजमी. ठीक है, 1000 वर्ड्स तक मैनेज कर लेना, एक थोड़ा सेफ साइड हो जाएगा. लेकिन उसके अंदर तुम क्या लिख रहे हो ये बहुत मैटर करता है. सही है, व्हाट यू आर राइटिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है जी. अच्छा जी, सेकंड थिंग जो इसमें हमें अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है, first screening. During the first screening you are not allowed to make points, not allowed to make points. While if we talk about second, third and fourth screening, allowed to make points. ठीक है जी. अब इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं. देखिए ये होती क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसको और अंडरस्टैंडिंग के लेवल के ऊपर जाते हैं. एक्चुअली हमारा कोई भी मीडिया प्रोड्यूसर होगा, कौन होगा बेटा? मीडिया प्रोड्यूसर. हमारा कोई भी मीडिया प्रोड्यूसर होगा, एक्चुअली वो क्या करेगा? वो इनकोड करेगा. किस चीज़ को? वो इनकोड करेगा अपने नैरेटिव को, यानी कि अपनी स्टोरी को, और वो इनकोड करेगा रिप्रेजेंटेशंस को. इनकोडिंग थ्रू व्हाट? हम इनकोडिंग कैसे करते हैं? इनकोडिंग होती है बेटा टेक्निकल कोड्स के थ्रू, टेक्निकल कोड्स के थ्रू. ठीक है, इनकोडिंग इज पॉसिबल थ्रू टेक्निकल कोड्स. ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ठीक है,
टेक्निकल कोड्स की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो हमारे पास जो पहला टेक्निकल कोड आता है दैट इज ऑल अबाउट कैमरा रिलेटेड, ऑल द कैमरा रिलेटेड, कैमरा एंगल, मूवमेंट, कॉम्पोजिशन, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट टेक्निकल कोड। यानी कि नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए, रिप्रेजेंटेशंस को बिल्ड करने के लिए वी रियली नीड कैमरा कोड्स, ठीक है जी। एंड आफ्टरवर्ड्स वी नीड साउंड, and afterwards we need edit, ठीक है जी। अब एक्चुअल के अंदर एंड द नेक्स्ट एलिमेंट इज मिज़ेंसीन, ठीक है। अब डेफिनेट सी बात है, अब ये एक्चुअली देयर आर 4 वेपन्स टू द एनी मीडिया प्रोड्यूसर कि वो इनकोडिंग के लिए, अपने नैरेटिव की इनकोडिंग के लिए या अपने रिप्रेजेंटेशन की इनकोडिंग के लिए किसका सहारा ले, टेक्निकल कोड्स का, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, इस इनकोडिंग के बाद हम क्या करते हैं, हमारी जो ऑडियंस होती है, ठीक है, हमारी जो ऑडियंस होती है, व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू डिकोड इट, दे यूज टू डिकोड इट, ठीक हो गया। क्या करती है वो, डिकोड करती है। किसको डिकोड करती है बेटा, डिकोड करते हैं वो नैरेटिव को, डिकोड करते हैं वो रिप्रेजेंटेशंस को, क्लियर हुई बात, ठीक है। और हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिकोडिंग, हम भी ऑडियंस हैं, हम डिकोड के थ्रू क्या करते हैं, हम एक्चुअल में एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एनालिसिस, ठीक हो गया। एंड दिस इज एक्चुअली टेक्सचुअल एनालिसिस। समझ में आई बात कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम उन टेक्निकल कोड्स की मीनिंग को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब जब टेक्निकल कोड्स की हम बात करते हैं, डिकोडिंग की बात करते हैं, तो एक्चुअली वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट द क्रिएट मीनिंग्स। हमें क्या करना पड़ता है, मीनिंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग करनी पड़ती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग, एंड दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड टेक्सचुअल एनालिसिस। क्लियर हो रही है बात, आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज टेक्सचुअल एनालिसिस। ये टेक्सचुअल एनालिसिस होती क्या चीज है बॉस, समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है। इस बात को समझने के लिए वी नीड टू गो फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द होल आइडिया बिहाइंड टेक्सचुअल एनालिसिस कि वी ऑल आर ऑडियंसेस, वी आर डिकोडिंग द इंटरप्रिटेशन, वी आर इंटरप्रेटिंग द डाटा, हम उस इन डाटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं फॉर आवर टेक्सचुअल एनालिसिस पर्पस, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और चीज़ों को डेवलप करते हैं। देखिए जी, एक कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखिएगा, वेन एवर वी टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन, हमें नॉर्मली स्टूडेंट्स को जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा मसला होता है, दिस इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, कि स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंटेशन वाले एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है जी। अब सबसे पहले इस रिप्रेजेंटेशन वाली चीज़ को थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। अब जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो इसके हवाले से थोड़ा सा एक जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए, वो थोड़ा सा सोशल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपके जहन में है, तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि एक्चुअल के अंदर आपके कैरेक्टर्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, वो सोसाइटी के अंदर आइडेंटिफिकेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पर बेस करती है, आइडेंटिटीज़, ठीक है जी। तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा होना चाहिए हमारे पास। हम नॉर्मली किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम किन किन चीज़ों की रिप्रेजेंटेशंस की तरफ जाएंगे, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। हम जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, पहले हम थोड़ा सा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1 जो हम सबसे ज़्यादा बच्चे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्लास, ठीक है जी। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे क्लास एंड स्टेटस को एक साथ कर देते हैं। कभी कभी क्लास एंड स्टेटस एक साथ भी शेयर किया जाता है, लेकिन कभी कभी स्टेटस एक डिफरेंट साइन के तौर पर भी यूज़ होता है।
कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सब लोग इक्वल होते हैं, लेकिन बॉस का स्टेटस ज़्यादा होता है और एम्प्लॉयज़ का स्टेटस कम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा इस चीज़ को और लेके चलते हैं मेरा बेटा, एंड देन वी आर गोइंग फॉर जेंडर, ठीक है। देन हम उसके ऊपर बात करते हैं एथनिसिटी के हवाले से, बिल्कुल एज पे भी बात कर सकते हैं, एज, ठीक है। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ से, रीजनल आइडेंटिटी पे बात कर लेते हैं, अच्छा जी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ ऑल अबाउट द सेक्सुअलिटी, ठीक हो गया जी। ये हमारा एक कोर आइडिया हमने क्रिएट किया कि जिन जिन चीज़ों की रिप्रेजेंटेशंस को हमने फॉलो करना है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा और इसके डिटेल में जाते हैं। अच्छा, अगर मैं क्लास को थोड़ा एक्सप्लेन करूं बेटा, तो याद रखिएगा हमारे पास 3 तरह की कोर क्लासेस हम डिस्कस कर रहे होते हैं ज़्यादातर स्टीरियोटिपिकली। अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्टीरियोटिपिकली, ठीक है। अपर क्लास, क्या बात है आपकी, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, ठीक है जी। अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट द स्टीरियोटिपिकल रोल्स ऑफ दीज क्लासेस, स्टीरियोटिपिकल रोल्स, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं अपर क्लास की, दे आर होल्डिंग बिजनेसेस और दे आर लैंडलॉर्ड, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपके मिडिल क्लास की, दे आर नॉर्मली मैनेजर्स, प्रोफेशनल्स, ठीक है जी। एंड द लोअर क्लास इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड थ्रू मैनुअल और नॉन मैनुअल वर्किंग क्लास, मैनुअल एंड नॉन मैनुअल वर्किंग क्लास, non-manual workers. What is meant by non-manual workers? They are clerks usually. ठीक हो गया, ये बात क्लियर होती है, सही है। अच्छा, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने जाऊं, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम अपर क्लास का एक कल्चर अटैच करते हैं अपर क्लास के साथ, एंड दैट कल्चर इज कॉल्ड एलीट और हाई कल्चर। क्या कहते हैं बेटा हम इसको, एलीट और हाई कल्चर, प्रोफेशनल्स, सही है। अच्छा जी, अगर मैं इसके बाद बात करता हूं मिडिल क्लास के हवाले से, they are following the popular culture of the society. The high culture retain a lot of cultural values like paintings, classical music, the language skills. They are so much literate, and they are having some etiquettes of living the life, and they are having some cultural values behind them. But if you talk about the middle class, they are having some inspiration in terms of the cultural capital, but they don't have capacity to enjoy that particular thing. So they are following the popular culture of the society, and the upper class is following the high culture of the society. Okay. And if we talk about the lower class of the society, we are going to represent them with the low culture, or we can say mass culture. They are culturally deprivated. They are culturally deprivated. Okay, so this is a very important term to understand. High culture lead towards high status. Okay, popular culture may lead towards higher than lower class. Okay, the mass culture
may represent the lowest status within the society. This is all about the stereotypes attached with the class identities. Okay. Okay. अच्छा जी, अब देखिए मेरी बात सुने. Now we need to understand this very important thing. Now we need to talk about the second identity, which is okay. एक छोटी चीज है. How we are going to represent our class. Mise-en-scene code is one of the key element. ठीक है. Sometimes we are using the sound for particular to differentiate between the classes. Okay. Sometimes we are using particular sound code for the upper class and we are using particular sound code for the working class. So we can use the sound code also. And sometimes we are using the color grading tactics. So different color scheme for the upper class and different color scheme for the working class. Okay. Sometimes we are using the low key lighting for the lower class and the high key lighting for the upper class to show everything brighter. Is it clear? So this is all about the technical codes to endorse that particular class identities. Okay, so let's talk about some very important thing. This is more about gender identities linked with the gender. Initially we are talking about the binary identities in terms of gender, like male and female. If we talk about stereotypical roles, so the male are performing the instrumental role. Stereotypically, they are considered unemotional. While if we talk about the female identities, their role is more expressive. They are performing more expressive role. They are considered, stereotypically, they are considered as emotional. Okay. So if we talk about the male culture, so there is a differentiation between male and female culture. The male are more identified through instrumental, through masculine culture. Masculine culture, while the females are more represented through feminine culture. Okay, stereotypically the status of male is higher than female. So the male are enjoying high status stereotypically, but you may challenge this status in different sort of films and content. Okay, low status. Okay, fine. So we can also denote this thing with hegemonic masculinity. Hegemonic masculinity, the male is controller, powerful. Okay, and you can connote the female representation with emphasized femininity. Emphasize, the female is following the male. The female is following the male. Emphasized femininity, or as a female is performing the more expressive role. Okay. So if we talk about the feminine culture, it's more about the emphasized feminities. Okay, so how you used to represent the stereotypical masculine and feminine culture? We used to represent and differentiate through their roles. Actually, sometimes when the male is the female are performing the domestic role, it's more inclined towards the emphasized femininity and feminine culture, and as the male is performing the economic role, the more economic, enjoying the more economic power, it's more about the masculine culture. Any confusion till here? No. Okay, fine. So let's move forward. This is more about the ethnicity. Actually, it's a wrong explanation to define ethnicity. It's a very wrong explanation to define any ethnicity in terms of minority and majority only. Okay, actually, ethnicity is more about the social belonging.
Sometimes we are using the minority and majority term just to explain this thing, that this community is in power and this community is not in power. This community is having high status or performing major role, and this community is performing the minor role within the society. So you cannot explain ethnicity in terms of minority or majority, but sometimes we need to explain it by explaining, let's suppose if a person is in America and having some black background, so African American, so you try to emphasize more on their regional identity. अच्छा जी, let's suppose देखो, whenever I'm going to use this term, the minority and majority, it means society का एक mainstream culture है और एक ethnic minority सब culture है, ठीक है. अच्छा, अब क्या होता है society के अंदर, क्या होता है अगर हम इसको वही stereotypical means के अंदर minority और majority से explain करें. यहाँ पर सिर्फ मैं एक intimation के लिए यूज कर रहा हूँ उसको, एक सेकेंड. ओके जी, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, सिर्फ मैं यहां पे इंटिमेशन के लिए इस टर्म को यूज कर रहा हूं, ठीक है. माइनॉरिटी इन टर्म्स ऑफ दे आर परफॉर्मिंग द माइनर रोल्स विद स्टीरियोटिपिकली, दे आर परफॉर्मिंग द माइनर रोल्स विद इन द सोसाइटी, एंड मेजॉरिटी यूज टू परफॉर्म द मेजर रोल विद इन द सोसाइटी. ओके, afterwards I can say one very important thing, that the minority used to perform, they used to follow the minority subculture and the majority used to follow the mainstream culture of society, mainstream culture of society. Okay, if someone is following the minority subculture, stereotypically this is considered as a low status element, and if someone is following the mainstream subculture of society, this is considered high status element. I hope the things are fine. Okay, how to represent particular, how to identify particular ethnicity. The best thing to identify this thing is more about the mise-en-scene code, the costumes, props, am I right? The set design, the customs, the body language, facial expressions. This is more about the idea of ethnicity, how you are going to represent particular ethnicity in particular society. Okay. So, and afterwards, sometimes you can use some dietic sound. Let's suppose if they are showing some ethnicity in a temple, so there must be some bell ringing in the temple. You can go, and if you are showing someone in church, so there are bells within the church also. So, and if you are going to show someone in mosque, so you are going to show the sound of azan over there. So this is more about you are using the sound code to identify and to connote multiple ethnicities within your film and media text. Okay, so this is the core idea related to that. Afterwards, we can also talk about age cohorts. Age cohorts means age groups like childhood, young, adult, and elderly, actually if we talk about young and childhood people, stereotypically they are dependent. Adult people are considered as more independent. Elderly are also dependent. Sometimes you are going to encode the elderly identities with abilities and disabilities also. Sometimes you are going to show them as a healthy individual. Sometimes you are going to show them as a disabled individual, dependent on someone. Okay, so this is the basic idea. We can talk about if we talk about the childhood and young people, they are having their subculture like
youth subculture and everything like that, it could be more deviant. While if we talk about adult societies, this is more about mainstream culture. They are going to follow the mainstream culture, while the elderly people also follow the elderly subculture. So this is the core idea linked with the age identification. So how you are going to define the age, again with mezzanine code, is one of the key elements. Sometimes you are going to link the status with that, like you are going to show the elderly with the highest status, so some you are using the low angle shots. Why you are, when sometimes you are going to show them as a disabled individual, so you are going to go for the long shot, going for the loneliness. The short frame composition is more about the based on loneliness. You want to show the long shots, okay, just to connote this idea that they are lonely. No one is dependent. No one is going to support them. Any confusion till here? Everything is fine now till now? Okay. So we have some different identities like regional identities. Always try to emphasize on regional identities with the help of semiotics, or you can say signs and symbols. Like if we talk about the pursuit of happiness, there's a Californian number plate that shows that this person belongs from California. Okay, so this is all about the signs and symbols. Again, the mezzanine code is one of the key elements to identify any regional identity in any sort of media text. Okay, so this is more about the regional identity, and you can also talk with the use the dietic sound. Also, you can also identify some sort of dietic sound in terms of any music, any radio station, what they are talking about. Sometimes the directors used to encode the regional identity with the help of sound, with the help of mezzanine code. Sometimes with the edit also. Sometimes with the CGI also. Okay. Afterwards, we have another explanation in terms of ability and disability. I need to identify this thing. मैंने इसको अच्छा मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ. आपने किसी को एबिलिटी और डिसेबिलिटी के साथ दिखाना है. अच्छा, समटाइम लिसन, मेरी बात सुनो. एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी. ओके, देखो जो सोसाइटी में हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स होते हैं, क्या होते हैं? हाई स्टेटस इंडिविजुअल. लाइक स्टीरियोटाइपिकली अगर मैं मेल को बोलूं दैट द मेल इज अ मोर पावरफुल इंडिविजुअल एज कंपेयर टू फीमेल, स्टीरियोटाइपिकली अगर मैं बात करूं. बट अगर मैंने उसको किसी डिसेबिलिटी के साथ लिंक कर दिया तो उसकी जो पावर होगी, जो उसकी हेजेमोनी होगी, उसकी जो कंट्रोल होगा, वो लूज हो जाएगा. सही है. A man with the disabilities may lead towards the subordinate masculinity. The male is dependent on female. वो disabilities की वजह से female के ऊपर किस पे dependent है. यहाँ तक clear हो रही है बात? ठीक है. अच्छा, again we need to use the props for particularly to identify the disability. Props particularly. अगर मैं आपको बहुत बेसिक सी अभी रिसेंट एक एग्जांपल दूं, लास्ट एपिसोड जो थी परिजात की, उसके अंदर क्या हुआ कि वो जो तिरोतलैन होती है, जो आरजे होती है, नहीं देखा? अच्छा ठीक है. जो लास्ट एक एपिसोड था परिजात का, उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि एक कैरेक्टर था उनका, एक आरजे का कैरेक्टर था, वो ब्लाइंड आरजे थी एक्चुअली. तो वो उन्होंने क्या किया कि वो कैरेक्टर से बात कर रही होती है और कैरेक्टर को ये पता नहीं होता शी इज़ ब्लाइंड. ठीक है. और वो उन्होंने ऑडियंस को भी ये डेवलप नहीं होने दिया कि शी इज़ ब्लाइंड. तो जब वो जाने लगती है, वो उसको झड़क देता है. तो जब वो जाने लगती है तो पता चलता है कि वो अपनी ना वो जो ब्लाइंड जो स्टिक ढूंढते हैं, वो ब्लाइंड स्टिक तो वो ढूंढ रही होती है. तो वो यूँ उठाती है. तो जब वो उठाती है, अब वो प्रॉप जो है वो कनोट कर रहा है कि दैट दिस कैरेक्टर इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी. Am I right? You are going to use some sort of props particularly to connote that this character is having some sort of disability. Is that clear to you? Okay. Yes. Sometimes you are using some sort of any glasses to connote that this person is blind. Sometimes you are using some sort of some earpiece to
connote this thing that this character is not able to hear properly. So, or sometimes you are using the facial expressions also, that you are saying hello, वो बोला सामने वाला character बिल्कुल अपने आप को ignore कर रहा है, वो सुनिए था, hello बात करो, सुनो बात सुनो, तो afterwards क्या हुआ, facial expression से sound से आपने क्या connote किया, that this character is having some sort of disability. Any confusion चल here? Okay, so and afterwards we can also talk about the sexuality also. So it could be the sexual representation may be based on heterosexual norm, like romance scenes. The sexuality may represent through non-binary explanations. Non-binary means LGBTQ plus. Continue. Okay. So अब क्या होता है कि lesbian, gays, bisexuals, transgenders. So non-binary explanations. Okay, excuse me. And afterwards, there's a big issue related to the sexuality. This is more about what? This is all about the objectification of women. The Laura Mulvey theory of male gaze. So this is the core idea attached with the sexuality. Sometimes we used to represent the male gaze elements with the help of costumes. Okay guys, so we have discussed this thing, there's a concept of male gaze, and we used to emphasize on these identities with the help of costumes, particularly in male gaze context. And sometime we are going to talk about the facial expressions, or we are using the facial expression and body language to discuss about the heterosexual norm, particularly the romantic scenes and everything like that. Sometimes the narrative rotates around the non-binary explanation of gender, like LGBTQ. This is more about the representation of narrative. Okay, so if we move forward, we need to understand some very important thing. Now we are talking about, previously we were talking about only the stereotypical gender, class, ethnic roles. Okay. Now we are going to talk about the globalized, once a director wants to challenge the dominant ideologies of the society. Like a director may go towards the blurring of class identities. In postmodern society, the class identities are blurred due to a similar consumption pattern of all the classes. Okay, blurring of class identities. Once you are going to say that the upper class, middle class, and lower class, all the classes are using similar products, like all the classes are using the McDonald's, all the classes are consuming the jeans from the Levi's. So this is all about the mass brands of the masses. Everyone used to consume those brands, so it may link towards the blurring of class identities. Okay. Afterwards, you can connect the changing male and female identities. This is very important to understand. In postmodern societies, the male and female identities are consistently changing. Like the male identities may link towards the new men, a men who used to perform the domestic and economic both functions. And you can also talk about the subordinate masculinities. Subordinate masculinities means a male who's facing the disabilities within the life. You can also talk about the marginalized masculinities. Marginalized masculinities. Marginalized masculinities stands for what? The male is pushed to the margins due to unemployment or due to debt or something like that. Okay, so due to these reasons, the male is not performing his hegemonic function, or a function of a controller, or function of an economic powerful individual having high status. Okay, so you can also talk about the female identities. Over the period of time, the female identities are also changing in terms of assertive feminities, like girl power,
based on ideas of feminism. There are some female identities in terms of autonomous feminities, who is more independent, autonomous feminities or autonomous identities. This is more about the middle class, middle-aged, educated woman who is challenging the masculinity within the society, within the workplace. So this is all about the autonomous feminities. So this is all about the changing role of female and the changing role of male in multiple societies. Okay, afterwards we can also talk about the hybridization of ethnicities. Actually, over the period of time, ethnicities are hybridized. How the ethnicities become hybridized, or you can say hybrid means two in one. One ethnicity is following the culture norm of different ethnicities. Like if we talk about the Brazian are the people who are Asians but living in Britain. So they are having some of the values from the Asian culture, and they are having the most of the values from the Britain culture. So this is all about the Brazian. Okay, hybridization has also occurred due to geographical mobility. The people are moving from place to place. Immigrants. I have shown you the Citizen Khan. It was based on hybridization of ethnicities, that they move from Pakistan to Britain. So they are having the mixed identities, mixed representation. Okay, so geographical mobility and hybridization occurs due to globalization. So impact of global culture on one ethnicity, impact of global culture. Let's suppose if Pakistani is having KFC, or if Pakistani is having McDonald's, or Indian is having McDonald's, so it may lead towards the idea of global culture. Their identities are hybridized with the global culture. Okay, so this is all about the hybridization of ethnicities. Any confusion till here? I hope the things are fine. Okay, now come towards here. Whenever we are making some points related to edit, always try to focus on one thing. First, try to find out one very basic thing: continuity or discontinuity editing. Okay? Continuity or discontinuity editing refers to what? That the discontinuity editing is having what? Having linear editing or linear cutting, which is also all about the cut to cut, or you can say match on action. One shot is linked with another shot, and the discontinuity editing is having jump cut. First, you need to find out the cut, jump cut, montage. Always try to figure out these two things whenever you are going to talk about edit: continuity or discontinuity. Okay, sometimes they are going for the slow-mo, fast pace. Okay, afterwards try to focus on the pace of edit. Once they want to emphasize on one scene, they are going for the slow-mos. If they want to move forward, they are going for the jump cuts or the fast pace edit. Okay, so whenever two characters are talking to each other, there are some key elements to identify. Number one, short reverse shot. Short reverse shot stands for whenever their two characters are talking about, let's suppose here is character A, here is character B. Okay, number one thing to understand is all about eye line match. ठीक है, eye line match जरूर होगा उसके अंदर, and afterwards
देयर इज समथिंग लाइक शॉर्ट रिवर्स शॉट. शॉर्ट रिवर्स शॉट का मतलब क्या होता है? पहले एक कैरेक्टर को दिखाएंगे, फिर दूसरे कैरेक्टर को दिखाएंगे, एंड दे बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर. उन दोनों की आई लाइन मैच करेगी. एम आई राइट? ठीक है. एंड आफ्टरवर्ड्स मैंने आप लोगों को एक चीज पहले भी सिखाई थी. दिस इज ऑल अबाउट द 30 डिग्री रूल. कि एक कैमरा दूसरे कैमरे से कट करेगा तो उसके अंदर 30 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए. कर सकते हैं आप, बिकॉज अब कट टू कट दिखा रहे हैं 30 डिग्री रूल. अगर 30 डिग्री रूल क्यों होता है? देखो लेट्स सपोज, देखो मेरी बात समझो. एग्जैक्ट 30 डिग्री सिग्निफाई करता है मैच एंड एक्शन. मैच एंड एक्शन फॉलो हो रहा है. अब लेट्स सपोज एक कैमरा यहां पे मैंने मास्टर पे लगाया. अब मैं व्हेनेवर आई एम गोइंग टू फोकस ऑन मिस्टर ए, अब ये जो ये था ये 2 कवर अप कर रहा था, 2 शॉट निकाल रहा था. अब मैं इस पे गया और मैंने यहां पर एक कैमरा प्लेस किया मिस्टर ए का क्लोजअप उठाने के लिए. ठीक है. या फिर मैंने इनका ओटी उठाने के लिए. ठीक है. इन दोनों में डिफरेंस 30 डिग्री का है. 30 डिग्री का डिफरेंस है. दिस इज ऑल अबाउट 30 डिग्री. क्लियर? हाँ, दो शॉट्स के अंदर, कट्स के अंदर 30 डिग्री का रूल होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है. 2 शॉट्स में 30 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए. यस बॉस. हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता. अगर कट टू कट जा रहे हैं, यहां से लगा के यहां नहीं लगा सकते कैमरा. यहां लगा देंगे तो जंप आएगा. 2 से डायरेक्ट 1 पे जाएंगे, डायरेक्ट जंप आएगा नहीं आएगा. अगर आप थोड़ा कैमरे को मूव करके लेके जाएंगे तो फौरन जंप नहीं आएगा. नहीं, कैमरा तो हम पहला कट नंबर 1 ये था. कट नंबर 1 ये था. 2 दिखाया, लीनियर एडिटिंग की तरफ जाए, वो कंटिन्यूटी एडिटिंग की तरफ जा रहे थे. अगला शॉट हमने ये दिखाया, इसका ओटी दिखा दिया एक. क्लियर हुई बात? तो जब हमने कैमरे को मूव किया, प्लेसमेंट चेंज की, तो ऑटोमेटिकली ये चीज होगी या नहीं होगी? तो मैं एक और चीज से दिखा दूंगा, समझा दूंगा, टेंशन नॉट. ठीक है. एनी कंफ्यूजन टिल हियर? इज इट क्लियर? Same case goes with sound. Whenever you are talking about sound, focus on dietic sound or non-dietic sound. This is all about the categories. Let's suppose if a character is talking, dialogue, foley, this is all about dietic sound. ठीक है. साउंड स्कोर्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सारा क्या हो जाएगा? नॉन डायरेक्ट साउंड. ये साउंड क्यों लगाया जाता है? जस्ट टू नरेट द स्टोरी, फीलिंग, इमोशंस क्रिएट करने के लिए, स्कोर्स डेवलप करने के लिए, एक बैकग्राउंड फीलिंग क्रिएट करने के लिए, व्हाट वी आर गोइंग टू डू. एनी कंफ्यूजन टिल हियर? आई होप द थिंग्स आर फाइन टिल नाउ. यू लर्न समथिंग टुडे. ठीक है. This will definitely help you out to understand multiple concepts in terms of textual analysis. Any questions about textual analysis? I'm here to open for. Sir, any questions?